हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. दिस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन बॉडी. लेट्स से दिस इज ए गिवन body and we want to find moment of inertia about a given axis. Then we draw a parallel axis to this axis and that is passing through center of mass. Let AB be the axis passing through center of mass and we want to find moment of inertia about CD, and the perpendicular distance between these two parallel axes is h. Then moment of inertia about CD is equal to moment of inertia about center of mass plus mass of the body with the square of the perpendicular distance between the axes. तो इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. According to this theorem, moment of inertia of a body about any axis is equal to sum of moment of inertia of the body about the parallel axis passing through center of mass and product of the mass of the body with square of the perpendicular distance between parallel axes, and mass of the body with square of perpendicular distance between the axes, between the parallel axes. Okay, again the statement is the moment of inertia about a given axis is equal to the sum of moment of inertia about a parallel axis to it passing through its center of mass and square product of the mass of the body with square of the distance between the axes. Let us suppose, देखो, if a body is rotating about its center of mass position, then it is moment of inertia is I about only center of mass. If it is rotating about this, then the body is changing its configuration as well as its center of mass is rotating about this axis. Then we have to know about the distance h and mass of the body concentrated here. So this is the mass of the center of mass. It is also rotating about this axis. So moment of inertia of this mass about this is m into h square, and plus this is the moment of inertia of the body here. So total moment of inertia about a parallel axis is I about its center of mass plus center of mass rotation about the given axis, that is m into h square. Total moment of inertia will be IAB plus m into h square. आप इसका प्रूफ को ड्राइव करने के लिए let us consider it is made up of a number of particles and ith particle has the position from here. Let's say it is mith mass, it is the ith particle having mass mi, and it is distance ri from center of mass, and this distance from about CD will be ri plus h. Then I about AB will be I about AB. General formula for discrete system is summation I going from 1 to n number of particles, let
and mi into ri square. That is, you can say m1 has the position from center of mass r1 square plus m2 has the position r2 square up to mn into rn square. This is the formula for discrete system, and this can be written as summation I1 to n mi ri square for this rigid body. Now if we want to find I about CD, that is mi into ri plus h, the distance of the ith particle from this axis of rotation is mri plus h. So this formula is summation I1 to n mi into ये हो जाएगा ri plus h का square of the distance. From here you can find I going from 1 to n mi square को ओपन करेंगे a square plus b square plus 2ri into h. अलग अलग इस समेशन को अप्लाई करेंगे तो समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 टू n mi ri स्क्वायर प्लस समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 टू n mi इंटू एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कॉन्स्टेंट है बाहर लेके आ सकते हो mi ri और इंटू एच. यहाँ से दिस समेशन mi is the total mass of the body and this is moment of inertia about AB. तो आप इसको लिख सकते हो I about AB plus mass of the body into h square. This term is extra here, and as we know moment of mass about center of mass इज 0. तो जो समेशन mi ri है वो क्या होता है 0 के इक्वल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज यूनिफॉर्म, सो समेशन mi ri विल बी इक्वल टू 0. तो ये यहाँ पे पुट करेंगे 0 हो जाएगा यहाँ से. तो I अबाउट CD इज इक्वल टू I अबाउट AB प्लस m इंटू एच स्क्वेयर. दिस इज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. आप इसको भी ड्राइव कर सकते हो. लेट why the moment about center of mass is 0. उसके लिए आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिखो. Let say it is the position of center of mass having the position vector r, and this is the position of ith particle in the body. This is the body and center of mass has the position r and ith particle has the position ri, and with respect to center of mass its position is ric, position of ith particle with respect to center of mass. So using here, first of all, as we know that summation r is equal to summation mi ri by mass of the body, या you can say m into r इज इक्वल टू समेशन mi ri. हमें पता होता है कि जो सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय द फार्मूला समेशन mi ri बाय मास ऑफ द बॉडी, या समेशन mi. mr इज इक्वल टू समेशन mi ri. अब यहाँ से आप ri की वैल्यू को यूज कर सकते हो. ri विल बी यूजिंग ट्रायंगल लॉ r प्लस ric. ri इज इक्वल टू r प्लस वेक्टर ric. तो यहाँ से आप ri की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो. समेशन mi इंटू ri हैज़ द वैल्यू r प्लस ric. यहाँ से इसको ओपन करो. समेशन mi इंटू r प्लस समेशन mi ric. ये जो टर्म है समेशन mi, इसको मास ऑफ द बॉडी बोलेंगे प्लस समेशन mi ric. दिस इज mr. दिस फैक्टर कैंसिल आउट. यहाँ से आपको मिलेगा mi इंटू ric इज इक्वल टू 0. यही टर्म आपकी होती है मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास अबाउट एनी एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास. तो दिस इज 0. तो इसलिए हमने जो समेशन mi ri वाला जो फैक्टर था उसको क्या कर दिया 0 कर दिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.